Microphone on. Sure. Polyuria. Obviously excessive water fluid intake, alcohol intake. तुम्हारा डीएम में भी हो रहा है. डीएम में तो होएगा ये. पॉलीरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया, डायबिटीज इंसिपिडिस, पिट्यूटरी नेफ्रोजेनिक, renal chronic renal failure, recovery from acute tubular necrosis, analgesic abuse, nephropathy, compulsive water drinking. इससे आ रहा है I should drink some water. Pyuria, pus in urine, right? Pyelonephritis, pyonephritis, perianal abscess, renal tuberculosis, non-effective hypersensitivity nephritis, analgesic nephropathy, hypokalemia, nephrocalcinosis, lead poisoning, radiation nephritis. Fine. Lower urinary tract, cystitis, infective radiation, cytotoxic drugs, urethritis, adnexa, perinephric abscess, gynecological infections. Fine. Frequent micturition and nocturia. That would be polyuria. Polyuria would be excessive fluid loss. Frequent micturition is बार बार जा रहे हो. Cystitis, small contracted bladder tumors, vesicular calculus, cystocele. Incomplete evacuation of the bladder neck due to enlarged posterior structure of urethra. Incompetent internal urethric sphincter, ectopic urethritis, neoplasm, balanitis, stricture of urethra, pinhole meatus, phimosis. Polyuria, psychogenic pregnancy, third pressure from surrounding structures. Hesitancy and precipitation of urine. Okay. Urethra, सारे itis हो रहे हैं सारे. हेजिटेशन सेरिब्रल. ओके, यहाँ पे सेरिब्रल हो जाता है. फ्रीक्वेंट मैच्योरेशन में सेरिब्रल नहीं, पर हेजिटेंसी में है. सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट, सेरिब्रल ट्यूमर, हेड इंजरी, यूरिनरी ट्रैक्ट डिजीज, एनलार्ज्ड प्रोस्टेट, ब्लैडर, नेक ऑब्स्ट्रक्शन. इधर भी नेक ऑब्स्ट्रक्शन था. ठीक है. रिटेंशन ऑफ यूरिन, स्पाइनल कॉर्ड डिजीज, ट्रांसवर्स एंड कंप्रेशन माइलाइटिस, कॉर्डा इक्वाइना. Okay, that leads to retention. Cauda equina lesions, multiple sclerosis, genitourinary phimosis, posterior urethral valve, foreign body stone structure, rupture, spasm, sphincter, prostatic enlargement, bladder, atony, tumor, stone or compression by fibroids or retroverted uterus. Following parturition drugs, sympathomimetic agents, salbutamol, terbutaline, anticholinergic drugs, genitourinary retention. Retention में sympathomimetic, obviously retention of urine में sympathomimetic drugs आएंगे. Hematuria, glomerulonephritis, सबसे पहला वही आता है. Renal infarction, tuberculosis, interstitial nephritis, papillary necrosis, polycystic kidneys, यूरेट्रिक में ट्रॉमा हो गया, ट्यूबरक्लोसिस, स्टोन्स, नियोप्लाज्म्स, ब्लैडर ट्रॉमा, ट्यूबरक्लोसिस, स्टोन्स, नियोप्लाज्म्स, सिस्टाइटिस, फॉलोइंग साइक्लोफॉस्फेमाइड थेरेपी, यूरेथ्रल ट्रॉमा, स्टोन्स, फॉरेन बॉडी यूरेथ्राइटिस. सारा वही है भाई. ट्रॉमा. ऑब्वियसली तुम्हारे यूरिनरी ट्रैक्ट पे ट्रॉमा पड़ेगा तो ऑब्वियसली होगा. लाइक व्हाट एल्स आर यू इवन थिंकिंग? Prostatic prostatitis, neoplasm, systemic diseases, diabetes, amyloidosis. Amyloidosis is very favorite term. So यहाँ हेमाटूरिया में amyloidosis होता है. डायबिटीज़ में भी होता है. ओके. disseminated intravascular coagulation, एन्यूरिया, उसमें हेमाटूरिया होता है. एन्यूरिया निकल ही नहीं रहा है. वापस से ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, पाइलोनेफ्राइटिस, पॉलीसिस्टिक किडनी, chronic renal failure, systematic lupus erythematosus, pre-renal, diarrhea and vomiting. Okay, एन्यूरिया, डायरिया एंड वॉमिटिंग में भी होता है क्योंकि तुम्हारा सारा पानी निकल गया दूसरी जगह से, तो इधर से कैसे निकलेगा. बर्न्स में होगा ब्लड लॉस, हाइपोटेंशन, सेप्टिसीमिया, इंट्रावास्कुलर हेमोलिसिस, ऑब्स्ट्रक्टिव कैल्कुलाई इन किडनी और यूरिनरी ट्रैक्ट, ब्लॉकेज ऑफ ureters by malignancy or crystals, retroperitoneal fibrosis, accidental ligation during surgery. Accidental ligation हो गया हमारा रोल. This is so stupid. But shit happens.